फिर आ गई, पहुंच गई अपने घर पे। आज बहुत बड़ा दिन था कॉलेज में। अपने कॉलेज बहुत अच्छा दिन निकला अपने मेडिकल कॉलेज में। और बहुत ही प्यारा है वो मेडिकल कॉलेज मेरा। और इतनी वादियाँ हैं, इतना इतनी क्या बोलते हैं, निसर्ग है वहाँ पर। इतना अच्छा लगता है। और जो लोग दिखते हैं वहाँ, कितने गरीब हैं हम वहाँ के लोग, मतलब जो रियल आदिवासी या ट्राइबल है। और ये हॉस्पिटल, इतना जो मेडिकल कॉलेज, उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो आज पूरा दिन तो वही निकला अपना रूटीन काम में। और आज तो पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा टेक अ ब्रेक, क्योंकि बहुत धूप में मैं चली हूँ। और अभी I don't want to stress myself because then I'll start getting migraine. Okay, this one is for Niels. Niels, thank you for subscribing my channel, and I wish you and your son a lot and lots of success. And I always see your song and your production. I'm really proud of both of you, and you guys are real team. So Niels was my batchmate in Brussels in 1980s. So, and he has a super duper super duper talented son, and you must subscribe him on Spotify. Both son and the father are very a real team and very talented. Okay, so thank you, Niels. Thank you for subscribing my channel. So the day was very. I just wanted to एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. I mean now I have to थोड़ा मुझे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरे दोस्त लोग हैं. Some friends are now from Brussels, so they should also understand or whatever. So I was not you know what, why I've become like that, बाहर का नहीं खाऊंगी, अपने हाथ का खाऊंगी. You know what, I was a very, because there's still a fat child inside me. I was a fat, obese teenager. I was an overweight teenager. And जब मैं MS भी कर रही थी, बहुत मोटी हो गई थी. And I had to hear words like, from the family, from my own family. People would call me Little Lota, or they would call me Baby Elephant. And I would feel, Little Lota उस समय, मजाक हुआ करता था. मूवीज़ आते थे इनके, क्या अशोक कुमार की जो बेटी थी, उनका नाम क्या है, जो थोड़े से हैवी वेटेड थी, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे. So they used to call me those names, and even family, and they used to laugh at me. So whether it was my parents or whatever, everyone would tell me, or my uncles or whatever, Little Lota or whatever, Little Elephant. And that hit. And I'm not like my daughter Akanksha, where I had that much of intelligence to fight back and say that you can't body shame me. So I took it, but I did it in another way. I said I started losing weight. So my relation with food started after that. I started walking and I started climbing stairs and gymming, and I became totally passionate about it. And I started avoiding. I used to love eating rice, and I used to love eating. I was a fish and rice eater. Fish, non-veg I gave because of my faith. I gave it, and slowly because I was into, मैं स्वामी समर्थ का पूजा करती. I have my own. I don't know. I didn't feel like eating. One fine day, I just I said कि नहीं, अब मैं नहीं खा सकती, मुझसे नहीं, अब मैं नहीं, ये अंडा वंडा मुझसे नहीं खा सकता. But I was I was a full-fledged non-veg eater. Yeah, I could eat fish and chicken and mutton. I could eat, I used to eat those double burgers and all. Up to I can't even see egg. This is the last 12 years I can't. When I pray, I don't know, it is because of my prayers or what I can't. Or one day, maybe one fine day, I just gave it up. I don't miss it. I don't miss it at all. Okay, so the journey was, the fat kid. I was a fat kid. And then the toxic relation with food started. I started giving up on a lot of food and sugar and a lot of things which I loved. I used to love banana.
For 20 years, I stopped eating banana. I've started eating banana now. I don't know how many years I have left. मुझे अब कितनी साल बचे हैं मुझे मेरे पता नहीं. I'm already 54 come. I'll be 54 in October. So I've started eating banana. नहीं तो मैंने आम खाया नहीं. मैंने 20 साल आम खाया नहीं. मैं आम बहुत खाती थी. आम खाया नहीं. मैंने ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी. The best my most favorite thing was American brownies in my class in ISB. I was in the International School of Brussels. मैं ब्रसल्स में पढ़ती थी. वहाँ पर American moms used to make brownies, batches of brownies, and I used to absolutely love brownies. And my craze for brownies till date has not gone. But I started giving up on everything: chocolate mousse, brownie. For 20 years, I've not eaten anything of that. For 20 years, I haven't eaten butter. चीज़ तो ठीक है मुझे ब्रेड बटर आई यूज्ड टू लव ईटिंग ब्रेड बटर एंड sugar. I can't eat butter. I can't. I get blocked. I loved Sizzlers. I stopped eating so many things. I gave it up. Now I'm slowly trying to come back because life is, and I've started to moderation, but I don't feel guilty. So I was body shamed so bad. Don't body shame people. It's not good. I never body shame my baby, my daughter, or anyone. I didn't body shame her because I didn't see her. I saw her as a daughter. I didn't see her fat, thin, or whatever. But I was called little lota, little elephant, or whatever. What all those things. Anyways, so my talk. So 20 years bread butter was. I would go to a restaurant in Mumbai. And I would, as a little child, I would ask for bread, butter, and sugar. That was my favorite dish, and people would laugh at me. And for 20 years, 25 years, I don't think I've touched butter. I've not eaten bread and butter. Now slowly I'm coming back on tracks because we don't know what brings. We don't know anything about tomorrow, right? And I'm done with most of my responsibilities. I've raised a child. I've done my, I have been a fairly good teacher of surgery, and I'm proud that my students have done so well. They are specialists and super specialists, and they are hospital owners, and their wings are there is a lot of wind beneath their wings, and when I look back, I've done a lot of things. And I've a lot of things without realizing it. Yeah, maybe I was not a good mother because I was growing up with my child, and maybe sometimes I was also crying. अंदर से मैं भी रोती थी कि I'm crying for help. Anyway, there are a lot of, if at all I need forgiveness from my child. But I have raised many children and made them surgeons, and I have always appreciated very good things in people. I have seen my students observe me, and a lot of students would change from medicine to surgery. They all wanted to become a surgeon when they would look at me because that was the energy, that was the aura in my unit, and I totally enjoyed it, and they enjoyed it. Anyway, everything expired. That period expired. Now it is time to pass it on. Whatever I gave, they must be passing it on. Above all, I think my students have become a very good human beings. Anyway, so don't body shame people. मोहन आंटी, now this is for मोहन आंटी. मोहन आंटी, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ. मैं आपको इग्नोर नहीं करती थी जब आते थे. आपको मैं बता दूँ, मैं हमेशा से ऐसी थी. मैं कभी, I was not a crowd person. I'm not a person with lot of friends. I don't keep lot of friends. And my concentration, when I came from Brussels to India, it was the education was very difficult for me. Because in America it is more application of knowledge. Here there was more rote type of I could not understand chemistry equations and all, because that time I have just the transition was very difficult for me. तो मैं इसके लिए मैं दूसरों से 2 गुना मेहनत करती थी. और मोहन आंटी, मेरे यहाँ मम्मी लोग didn't realize, they might not have realized that a child takes a lot of focus to read. All children are not born intelligent. And I wanted to, and 12th, I was lonely. I would get up lonely at 4 o'clock in the morning. And मेरे बाजू में सिर्फ एक घर देखती थी जहाँ अंजनेय अंकल रहते थे,
उनकी लाइट और मेरी लाइट अलग, अकेले मैं अकेले पढ़ती रहती थी 4 बजे सुबह से लेके 9 बजे तक। इट वॉज वेरी लोनली बिकॉज माई पेरेंट्स देर, कभी तो आप लोगों का तो बहुत सारा पार्टी शार्टी होता था, आप लोग तो कुछ अलग ही दुनिया में रहते थे, आप आंटी लोग, मुझे पता नहीं। और जब भी मैं थक मर के घर पे आती थी आंटी घर पे, खाना, मेरा खाना, मेरे लिए जो खाना पड़ा हुआ होता था वो खाना गायब हो जाता था। वो खाना क्यों गायब हो जाता था उसकी स्टोरी अलग है, अगर आपको पता चले कभी तो। क्योंकि जो आते थे वो खा के चले जाते थे, जो फ्रेंड आ जाते थे वो खा के चले जाते थे, तो इतना भी खाना भी मेरे लिए टेबल पे नहीं रखा, मेरा खाना टेबल पे रखा हुआ खाना भी ख़त्म हो जाता था आंटी। तो मैं वैसी नहीं थी, और मुझे फोकस करना पड़ता था अपनी पढ़ाई पर, और जो मैं नहीं हूँ मैं वैसी क्यों बनूँ। हाँ, शायद अगर गोशी, अंजुदी और अर्चू बहुत चटर पटर कर सकते, मैं नहीं करती थी, मुझे नहीं, मैं वैसी थी नहीं, मैं क्यों ऐसी बनूं। हाँ, मैं रूम से बाहर नहीं आई, क्योंकि मैं रूम से बाहर नहीं आई क्योंकि आप मम्मी से मिलने आए थे, और मैं रूम से बाहर नहीं आई, मुझ में शायद उतना विजडम नहीं होगा, मुझे पता नहीं, मुझे ये सब याद ही नहीं है। बट आई हैव डन अ लॉट आंटी, आई हैव डन अ लॉट फॉर एवरीवन। आई टेल यू, मैं 8 महीना प्रेग्नेंट थी। माई मदर वुड आस्क मी टू लुक आफ्टर नागपाल अंकल इन टाटा। मैं टाटा भाग भाग के जाती थी, क्या आप अपने 8 महीने प्रेग्नेंट डॉटर को टाटा हॉस्पिटल में बार बार भेजोगे जस्ट बिकॉज यूर अ डॉक्टर। क्या मुझे थकान नहीं होती थी आंटी, क्या मुझे दुख नहीं होता, क्या तकलीफ नहीं होती थी आंटी। सहगल आंटी कंटिन्यूसली मेरे अंकल जेजे में एडमिट करती थी, आज तक मुझे समझ नहीं आया सहगल आंटी की बेटी पिंकी को क्यों नहीं बोलती थी, जो जीएम साइड थी, मुझे क्यों आंटी मेरे को बार बार मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी, क्यों उनकी बेटी मुरादाबाद में इतनी बड़ी ईएनटी सर्जन है, वो अपने पापा को देखने नहीं आ सकती थी, क्यों उपाध्याय आंटी को क्रैश किया, उपाध्याय आंटी टेबल पे मैं भागे दौड़े, इनको यहाँ थायराइड का ऑपरेशन किया, फिर उनको आईसीयू में हुआ, सर मित्र के लिए, अंकल के लिए मैं अभी कोविड में दौड़ी। आंटी, जो मैं बोल नहीं सकती मैं बोलती, मेरी माई मदर नेवर टोल्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, डजंट मीन दैट आई हैव नॉट डन अ लॉट, आई हैव बीन पुश्ड, I never received a single phone call from anyone. There are only 2 people who called me. There are only 3 people who valued me. Honey Flora, Gullu and Mona. Rest I never got a call from anyone. Archu not at all. Goshi not at all. Auntie, I have done a lot. बहुत किया। आप एक जो आपकी जो सहेलियां थी, जो आप लोग किटी पार्टी मनाते थे, आंटी मेरी जिंदगी में, इन माई लाइफ देयर वाज नो किटी पार्टी, इन माई लाइफ देयर वाज नो कार्ड पार्टी। आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्टेड टू स्टडी, आई एम नॉट अ पर्सन, आई वॉज सो टच्ड when you called me and you appreciated me on YouTube. No, I wanted to study, and some children take more time to study than others. और मुझे फजूल के बातों में पसंद ही नहीं था, किस बात से ये लड़कियां हंसती थी, हाँ हाँ ही, मुझे नहीं समझ आता था, और मुझे अलग करके रखती थी आंटी ये लोग। और अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे एडमिशन मिल गया ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में, आज तक मैं वैसे ही हूँ। मेरा जब थकी मारी आती थी रुइया कॉलेज से, तो खाना मेरा गायब हो जाता था टेबल में से। वो खाना कौन खाता था वो आपको, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, ये बहुत गंदी बात है अगर मैं आपको बताऊंगी आंटी, लेकिन मैंने आपके पीठ पीछे बहुत किया आंटी। कोई आंटियां मुझे फ़ोन नहीं करती है, कोई पूछती नहीं है मुझे, और ना करे तो बहुत अच्छा है, ना करे तो बहुत अच्छा है। कोई 50th बर्थडे पे आई नेवर गॉट अ फोन कॉल, आई डिड नॉट माइंड। I was asked, I was dropped on the 8th month pregnancy, I was dropped on the highway. I was looking after your friend's husband, who was my uncle, was like a father to me. I'm really तहे दिल से मैं हनी और रवि का, क्योंकि अंकल के लिए किया, उन्होंने मुझे मॉरिशस बुलाया और मॉरिशस दिखाया, but I'm not like other people. I think this thing is very, मोहन आंटी, अगर ये सब आंटियाँ आप लोग सुन लीजिए,
मैंने जो किया उसका नगाड़ा मेरी माँ ने नहीं पीटा, यही शायद अगर बेटा करता तो पिट जाता नगाड़ा। और ना आप लोगों, और ये मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोगों में से कोई मुझे फोन नहीं करता है आंटी। मैंने किया हर बार, जब जब उपाध्याय आंटी मर रही थी ऑन द टेबल, मैं मर रही थी उनके साथ। जब नागपाल अंकल तकलीफ में जा रहे थे तो मैं मर रही थी। जब जब सीए टंग के लिए शर्मा आंटी का हो रहा था, मैं मर रही थी। सदमित्र के लिए, अंकल के लिए कोविड में बेड, मैं फ़ोन कर रही थी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकती हूँ आंटी। कहाँ क्या अब मुझे बाकी सब अकड़ू? आंटी मैं अकड़ू नहीं हूँ, मेरी अपनी खुद की एक दुनिया है। और मैंने इस जीवन में, मुझे एज अ चाइल्ड, यू नो, नाउ दिस इज़ फॉर एवरीवन, दिस इज़ अ बिग यूट्यूब, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ sleeping in the dark. Now I only like the dark. Okay, so I used to be very scared. I used to snug into my parents' room. My parents hated it. Okay, for whole night I couldn't sleep. My parents hated me snuggling in their room. Okay, I had a scare, I had a fear. और जब everyone, जब मैं यहाँ आई, मेरे को सब फैमिली के सामने everyone would laugh at me and they would say कि इसके पीछे तो ब्रसल्स का गोस्ट है, इसको भूत है। अरे बच्चे को क्या डर नहीं लगता डार्कनेस से? अब तो मुझे डार्कनेस बहुत पसंद है। अच्छा हुआ कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चे के लिए बहुत किया और मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन कभी भी बच्चे को मोटा पतला मत बोलिए, या किसी और के बच्चे को मत बोलिए। अपना बच्चा को डर लगता है अगर डार्कनेस से, तो बहुत कुछ उसके अंदर तकलीफ होगी। एंड आंटी जहाँ तक मेरा पढ़ाई लिखाई का बात था, येस, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्टडीज़, आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्टडीज़। नथिंग कैन कम इन बिटवीन मी एंड माई स्टडीज़ वुड कम एंड आई वुड नॉट अलाउ दैट। येस, आई वॉज अ टाइग्रेस अबाउट दैट। आई वर्क वेरी हार्ड, आई वर्क वेरी हार्ड। और ये विधि का विधान है, ये मेरी गुरु की आज्ञा थी। इट हैज़ कम फ्रॉम अबव, दैट आई वांटेड टू, दैट इट वाज लीडिंग टू। और मैंने सर्जन बनना था, ये सब ऊपर से लिख कर आया था। बिना पढ़े लिखे दूसरे की ज़िंदगी नहीं संभाल सकती मैं। तो आंटी, अगर मैंने आपको दुख पहुँचाया है तो मैं आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप अपने अंदर के तीनों बच्चों को देख लीजिएगा प्लीज़। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैम मिलने नहीं आए, बाहर नहीं, मैं कैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। मैं जैसी थी ना, वो कोई बात किसी ने डिस्कस नहीं किया। यही आपकी किटी पार्टी के पूरे फैमिली ने, जो आप किटी पार्टी, ताश पार्टी, आप लोग की लंच पार्टी, वो पार्टी वो पार्टी, जो आप सब मम्मियाँ करती थी ना, बाद में किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा शायद। अब तो सब बूढ़े हैं, कुछ तो मर भी है। लेकिन एनीवे, मैं शायद ना मोहन अंकल जैसी थी, शांत। मुझे नहीं पसंद है इतना क्राफ्ट। हाँ, मैं जो सही लोग हैं ना, उनके सामने मैं खुलती हूँ। उसके लिए मुझे जिससे मेरी आत्मा मिलती है, उससे खुलती हूँ आंटी, बुरा मत मानिएगा। एंड नील्स, आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। देयर वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल one of my mom's friend, that according to her, that I was very I would not come out. I was reading all the time, studying all the time. But surgeons, and it's very difficult to get into medicine in India, and surgeons have to read and doctors have to study well. पेशेंट का लाइफ होता है उनके हाथ में, और कोई इंसान जैसा है ना वैसा छोड़ देना चाहिए। बस इतना मैं खुश रहूँ, मैं अकड़ती नहीं हूँ, वो मेरी खुशी है। मुझे लोग पसंद, वही लोगों के आगे मैं आ सकती हूँ जिससे मेरा मन भाए। फालतू के लिए मैं नहीं आती, मैं नहीं कर सकती। हाँ ही हूँ मैं, नहीं, मुझसे नहीं होता। हाँ, जहाँ पर वेर एवर द वाइब्स आर सिंक्रोनाइज विद माई वाइब्स, आई डांस विद द म्यूजिक। चलो, आई हैड अ नाइस डे टुडे एंड आई होप आप सब लोगों का दिन बहुत अच्छा गया होगा।
आप लोग थके हुए होंगे एंड चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स. बहुत काम करते हैं आप लोग के लिए आपके पेरेंट्स. और कभी कभी अपने पापा मम्मी का पैर दबा दिया करो. बहुत अच्छा लगता है ये सब. पापा मम्मी को थकान पानी दे दिया करो एक ग्लास. बिकॉज यू नो व्हेन दे कम होम गिव देम अ ग्लास ऑफ वाटर. आई नेवर गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन आई केम होम. So even the maids which I kept for my daughter would not give me a glass of water. They would go and give it to my daughter. They never thought that she has come and she's tired. So you know, I'm good. I don't need it. Anyways, so बच्चे लोग, if kids, all kids look after. I'm kids and people above 18 and people who have parents look after them. बहुत मेहनत करते हैं. मेरे पेरेंट्स भी बहुत मेहनत किए हम मुझे ऊपर आने को. You know, I had a very bad disease called Kala Azar in childhood. It is like death because I had visited Bihar and for 6 months I had fever. And my father used to carry me to he never took me to a private. He used to take me to the CGHS because and faith healed. I don't know what. In the end, they had to go to Dr. Agarwal because I was a sick child. 5 months I must have missed my school. But then I came 5th. I had this passion, you know, of studies. Even in EEC school, I would write an essay and my English was not so good. So the teacher would give me bad marks, you know, E, a D, E and all. And then I said, no, I want to do good. So I would write an essay, I would take it to my pa and my pa would correct the essay and then I started doing well. So it was intentional. I wanted to become better. I didn't want to become bitter. And I'm what I am today, okay? So, and don't body shame people. I don't body shame. Don't laugh at people if they're scared of darkness. But darkness is very soothing. Darkness is very nice. I love my darkness. I love my darkness. And I wait for the sun to come up the next day. Chaliye Shabak hai. Good night. And have a nice sleep. Nothing like a nice sleep and a nice laugh. Good night, Shabak khair. Bonne nuit. Bye. तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ. I'm on आंटी, बुरा ना मानना. Bye.